तो आज की तारीख में जो भी आपके सेल्स होते हैं, किस तरह का एंड कंज्यूमर है? मतलब कैन यू डिफाइन द प्रोफाइल? Who's actually coming into your stores and buying lab-grown diamonds? Sure. Actually, that's a very interesting question. जब हमने शुरू किया था, which was about in 2019, we always thought कि ये जो jewelry है is primarily for only those people perhaps who never thought of being able to afford a diamond. We always thought that it will be for categories outside of the current diamond purchasing generations or diamond purchasing clientele. But हमारे stores ended up proving us wrong. What we realized is Limelight jewelry turned out to be an upgrade for everybody. Somebody who couldn't, who always aspired but didn't have a diamond, now can afford a diamond with, very, very nice solitaire studded rings in the range of 20,000, 25,000 rupees. Somebody who was wearing a 1 carat has moved up to, having 2 carats of a solitaire. Somebody who was wearing 2.5 carats is now upgrading themselves to a 5 carat, Right. And as we move up the sizes, obviously there's a huge amount of money savings that happens in, in this situation, which is why girls of today are also sort of looking at it as, hey, here's this product. I have a similar product which costs me about 5 lakh rupees. Like a 1 carat ring will cost me 5 lakh rupees in naturals. The same exact identical make in lab grown costs me about 1 lakh rupees, as a ring. How about I save the 4 lakh rupees that I was going to spend, put it in a mutual fund and a, fixed sort of deposit. The returns that I will make will be far higher for me to buy more diamonds for myself, Sure, but one of the, apprehensions which the consumer has today, especially about lab-grown, is because they see diamonds as an investment. और उनका मानना ये है कि अगर इसके prices गिर रहे हैं, जो कि हुआ है, पिछले 6-8 महीने में, so इसकी अगर कोई buyback available हो, तो कोई interesting factor हो उनके लिए. और दूसरा, एज एन इन्वेस्टमेंट अगर हम खरीद रहे हैं, तो इसकी अगर कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. तो व्हाई शुड आई बाय? सर, कपल ऑफ थिंग्स. एक है कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में प्राइसिंग गिरने की बात करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, नेचुरल डायमंड के भी प्राइसिंग मार्केट में गिरे हैं, पर उसका एंड रिटेल में क्या इम्पैक्ट आता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. सिमिलरली लैब ग्रोन डायमंड्स में भी मार्केट में जो हो रहा है कांट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपको रिटेल में क्या मिल रहा है क्या नहीं. वो एक एब्सोल्यूट फैक्ट है कि आप यहाँ लैब ग्रोन डायमंड परचेस में यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, or within the same budget you are being able to upgrade and buy a much larger stone for yourself. जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हमेशा रिटेल लेवल पे कंज्यूमर्स they're always looking out for comfort from the brands in terms of the buyback and the exchange facilities. Now if this was a product that could not be of an investment category, then buyback and exchange would not exist in lab growns, but it does. We have the same buyback schemes. Even at Limelight as a brand, we offer 100% exchange on the product. In fact, we don't even cut making charges. We offer 100% buyback on gold and 80% on diamond. So the same kind of offers that exist in any other gemstone category exists for lab growns also. So to think of that from that perspective, it's an absolute investment. Okay. और जो अभी आपका स्टोर्स आपका एक है, कितने स्टोर्स हैं आपके? So we are currently at 3 stores and we are scaling up to about 8 stores before Diwali. Wow. So we're coming up with 5 additional stores. We have our stores in Mumbai, Kolkata, and additional stores coming up across the city. We're also available at 43 point of sales through shop-in-shops across 25 cities in the country. So Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, and even tier 2, tier 3 cities like Rajkot, Baroda. We have even had shop-in-shops in Amreli, Shivmoga, Jamshedpur. Okay. तो मतलब आपका presence is there in most of these border towns also, apart from the metros. And you have, what are your plans for the expansion? Yeah, I think, 3 months ago, the scenario for lab-grown diamonds was very different in India versus what it is today. I think consumers of today have fully, even in India, and thanks to Modi ji also, when he gifted and rightly called the product as a green diamond,
when he gifted it to the US First Lady. It has instilled a lot of consumer confidence. Consumers को आज पता चल गया है कि ये उतना ही असली है जितना natural diamond है. मान लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह, you know, just like how you're walking on the street can't identify between a naturally born child and a test tube baby. It's exactly the same way that a lab grown can't be identified from a natural. So अगर ये real ही है, अगर इसका प्राइस बेनिफिट भी है, अगर ये environmental friendly भी है, तो there is absolute, और उसमें बायबैक एक्सचेंज भी है, तो क्या हर्ज है फिर, you know, why am I hesitant to even buy it? And अभी मोदी जी ने भी बोल दिया है. So I think all these reasons are, you know, consumers are becoming more and more confident of purchasing. And going forward, we're going to come up with, at least a plan is to come up with a lot many more stores in the country, have our presence widely spread out in, you know, firstly the metro cities and then following on into tier 2, tier 3 cities. Our end vision is that we want to be India's largest sustainable luxury brand, which not only has a wide presence in India, but also internationally. So we'd like to take Limelight to international markets in the Gulf, in Australia, in United States and Europe as well. Apart from the affordability factor or the sustainability and environmental friendly factor, I as a consumer, if I have to, you know, buy a lab-grown diamond jewelry, why should I go to Limelight? And why not to your competitors? Sure. Yeah, I think at the end of the day, any consumer purchase for jewelry boils down to designing, right? It is, at the end of the day, the flaunt value is the design, the uniqueness, the styles, you know, the elegance of the jewelry that is being produced. I think in that sense, because Limelight is a vertically integrated brand with, you know, the Emerald Group and their manufacturing setup, we hold a lot of strength in terms of our inventory. We have a wide range of solitaire-based designs and, you know, the ability to move away from the classics, you know, and present solitaires in much more unique avatars is something that we constantly strive on. Play with colors, play with different shapes, play with fancy shapes that have not, you know, come out to the audiences, play with sizes that have not come out to the audiences, you know, within the relevant price points, less yellow or less gold, but more, you know, more shine. How do we elevate that in terms of our designs is something that we take care of, and we try and produce that to our audiences. In terms of the 4 C's, as we all know from the mined diamond perspective, is it just the same in lab grown, और यहाँ पे कुछ अलग होता है, या उसका सर्टिफिकेशन भी सही सेम ढंग से होता है? अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे खरीदना हो, तो ये मैं किस तरह से इसको देखूँगा? Absolutely. ये exactly जो natural diamond, जो labs and, you know, agencies natural diamond को certify करते हैं, वो ही lab grown diamonds को certify करते हैं. तो the 4 C's are exactly the same. और इसका कारण भी यही है कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी को समझने जाए तो हम क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल डायमंड का पत्थर ले रहे हैं, उसी की एक लेयर कट करके हम प्लाज्मा रिएक्टर में डालते हैं. देन वी रिक्रिएट द एग्जैक्ट एनवायरनमेंट जो डायमंड को नीचे मिलता है, वही एग्जैक्ट एनवायरनमेंट ऊपर रिक्रिएट किया जाता है. सेम गैसेस इन्फ्यूज होते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर सेट होता है, और गैस में से डायमंड बनता ही कार्बन से है. गैस में से कार्बन छूट के यहाँ पे लेयर्स बनाने लगता है, और वो धीरे धीरे आपके पत्थर में ग्रो होता है. अब जब वो पत्थर में ग्रो हो रहा है, दैट प्रोसेस नोबडी इज, कोई भी फिजिकली जाके उसको यू नो ग्रोइंग में हेल्प नहीं कर रहा है या कुछ मदद नहीं कर रहा है. वो ग्रोथ ऑर्गेनिक है, वो ग्रोथ नेचुरल है. यू नो एग्जैक्टली जैसे नीचे अर्थ के नीचे होता था वही ऊपर हो रहा है. इसीलिए इसमें भी सेम इंक्लूजन्स, यू नो कलर, क्लैरिटी, ग्रेडिंग एग्जैक्टली सेम वही आता है. ओके, तो जब ये कंज्यूमर खरीदते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, चाहे वो ऑप्टिकली हो, थर्मली हो, फिजिकली हो, 4 C's के पर्सपेक्टिव से हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. एब्सोल्युटली कोई भी फ़र्क नहीं है.
इनफैक्ट वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया में है लैब ग्रोन डायमंड की, उसको CVD बोला जाता है. दूसरा एक टेक्नोलॉजी है चाइना का HPHT, जिसमें मेटल इम्प्योरिटीज़ आती है. बट अगर आपका पत्थर CVD का है तो वो एंड में टाइप 2A डायमंड निकालता है, जिसमें नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी नहीं होती, प्योर कार्बन से बनता है. इसी वजह से उसकी ब्राइटनेस, लस्टर, शाइन is actually far better than any other type of diamond because it's the purest. Natural diamonds में भी सिर्फ 2% ऐसे निकलते हैं जो टाइप 2A हो, तो नेचुरल डायमंड्स में भी टाइप 2A डायमंड्स मिलना बहुत ही रेयर होता था, जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दे रही है. जी, आपने जो अपना ग्रोइंग प्रोसेस समझाया था, उससे मुझे एक जो एनालॉजी मतलब मेरे दिमाग में आती है कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम एक बार रेफ्रिजरेटर में अपना पानी से भरा हुआ ट्रे डाल देते हैं और वो अपने आप ग्रो होता है इनटू आइस. सो इट इज समथिंग लाइक दैट बिकॉज देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन. Absolutely. So I mean, for a consumer to understand, it is as simple as that कि we are just creating the environment जो रेफ्रिजरेटर में हम क्रिएट करते हैं वो ऑब्वियसली माइनस में जाता है बिकॉज हमको उसको आइस में बनाना है, या आई एम श्योर वॉट एवर द टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो सेम एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं जो हज़ारों साल पहले ज़मीन के नीचे माइंस में होता था. So it's just that. So there is no human intervention of any kind whatsoever. Absolutely. Right. Absolutely. Exactly. Okay.